Is it fine now? ठीक है? I'm audible? All right. I hope I'm audible to you now. So don't worry. Whatever I said, I'll repeat it for you. आपके बिना कहाँ जाऊँगा मैं? तो इसीलिए आप दोबारा सुनिए मुझे. What I said was, so first of all, good evening to all of you. Very nice to be with you. There was a small technical glitch, so we lost audio for you, but now it's all fine, I hope. So we can get going. All right, yeah, you will be able to listen to my audio now. So perfect. Thank you all for confirming it to me. So let's get going. So first thing I was saying was that a major trend has been observed in union government expenditure, and that is that continuous growth has been observed in capital expenditure. Major trend observed in union government expenditure, and that is continuous growth in government capital expenditure. In fact, if you ask me, what we see is that there is a tremendous increase in road transport expenditure, 2.7 lakh crore in this year's budget. और ये expenditures अगर देखा जाए तो हर साल almost 30% के रेट पे बढ़ते रहे हैं. If you go back to 2018, the total capital expenditure was not even 5 lakh crore. And if we come to 2023-24 budget, total capital expenditure by government is 10 lakh crore and plus 3 lakh crore of loans and other help given to state government. So effective capital expenditure at 13 lakh crore. So we see that capital expenditure is rising very fast, which is a good trend. You know, there is capex-led growth. That is the idea. And what is the help here? Continuous growth in capital expenditure to revive investment. The idea is that private investment can be revived. So to revive investment, private investment can be revived in this manner. You know, so what are we doing? First of all, there is the survey says that there is a pragmatic expenditure policy. अब समझिएगा आप, initial phase after pandemic, survey ये बता रहे हैं, initial phase of during pandemic, what we got, you know, initial phase during pandemic, what we got was comparatively higher growth. That is what we got initial phase. So initial phase during pandemic, focus on livelihood. That was this, targeting vulnerable sections. You know, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, spending on Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Swanidhi Yojana, स्ट्रीट वेंडर्स निधि स्कीम. तो ये सब किया गया जिस समय में पैंडेमिक बहुत ज़्यादा हमें अटैक कर रहा था. क्यों ये किया गया जब पैंडेमिक हमें बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा था? ये इसलिए किया गया बिकॉज पैंडेमिक के वक्त सिचुएशन ये थी कि सरकार ने चारों तरफ लॉकडाउन लगा रखा था. तो अगर सरकार अपने खर्चे ज़्यादा इधर उधर बढ़ाते, उसका फ़ायदा मार्केट को नहीं मिलता क्योंकि मार्केट तो बंद था. तो सरकार ने क्या किया, कहा देखो अभी कोई फायदा नहीं कि हम खर्चे बढ़ाएं इधर उधर, इससे अच्छा गरीब कल्याण अन्न योजना लाते हैं, स्वनिधि योजना लाते हैं, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी सिस्टम लाते हैं. सो गवर्नमेंट वाज फोकसिंग ऑन सेविंग पीपल, livelihood. So the survey says it is a well thought out expenditure policy focusing on vulnerable sections and then not leaving it post the pandemic, continuing with that focus on vulnerable section is another thing that survey says कि pandemic के बाद उसको रोके नहीं, वो vulnerable section पे focus बना के रखे. All right, not leaving it after pandemic, continuing with the vulnerable sections post pandemic. So continuing with Garib Kalyan Anna Yojana, continuing with emergency credit linked guarantee system, continuing with the enhanced scheme under PM Kisan, Matru Vandana Yojana, ये continue करते रहे सरकार. तो purpose ये था that the vulnerable section should not be left alone. Along with that, the second thing we did was
focusing on productive capacity building via capex. Now what was that focusing on capacity building? That is increasing capex steadily from a long-term average of 1.7% of GDP to 2.5% of GDP in 2022. Realizing that look, let's increase GDP. That was the idea by focusing on capital expenditure. तो लॉन्ग टर्म एवरेज था 1.7% ऑफ जीडीपी और उसे हमने बढ़ा के किया 2.5% ऑफ जीडीपी. इनफैक्ट तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं दैट आउट ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नॉर्मली व्हाट वी वुड डू इज वी विल स्पेंड नॉट मोर देन 10-15% ऑन कैपेक्स and the rest 75-80% will be on, or 85% will be on revenue expenditure. Till as late as 2019-20, out of total budgetary expenditure, not more than 20% was on capital expenditure and 80% used to be revenue expenditure. If we take the effective capital expenditure this year, the expenditure on capital expenses as a proportion of total budget is now almost touching 1/3. अगर इस साल को लें, मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना, पहले का एक ट्रेंड देखा था हमने कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के 20% से ज्यादा नहीं होता था कभी. अब हम ये देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर पहुंच रहा है, विच इज क्वाइट अ वेलकम ट्रेंड. क्यों वेलकम ट्रेंड? अगर आप एक्सपेंडिचर बढ़ाते हो एज अ गवर्नमेंट तो लोन लेना पड़ेगा. लोन चुकाओगे कैसे? जब आपकी ग्रोथ हो अच्छी. ग्रोथ अच्छी कब होगी? जब आपके पास संसाधन हो सही. संसाधन कहां से आएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर से. इफ यू आर टेकिंग लोन टुडे, how will you grow better? How will you pay back those loans? When you grow better, how will you grow better? When you have resources, where will the resources be developed from? From capital expenditure. So the shift towards capital expenditure, the shift towards capital expenditure has been a decent shift at the moment. All right, the shift towards capital expenditure has been a decent shift at the moment. If you recall, Avnish, that extension of PM-GKAY beyond what is permitted in NFSA, we had already discussed last class, is not something that we can welcome. So just go back to that. Capacity building का मतलब होता है आकाश, जैसे रोड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी देना, स्टोर हाउस बनाना, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देना, कोल्ड स्टोरेज चेन बनाना, एजुकेशन देना, हेल्थ केयर देना. जिन चीजों से आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाए वो हुआ कैपेसिटी बिल्डिंग. All right, then if you look at this further, the next thing is, what does capex-led growth do? Now think here again, when we look at capex-led growth, 7.5 lakh crores in fiscal year 23, plus it was another 2.5 lakh crore for state government. So effective capital expenditure was 10 lakh crore in 2022-23. This was the effective capex. अब ये बढ़ गया. अगर इसकी बात करें, in 2023-24, 10 lakh crore is what the government has planned, central government expenditure on capex, और साथ में 3 लाख करोड़ रुपए और दिए जा रहे हैं, another 3 lakh crore rupees for state government. अगर तुमने बजट का लेक्चर सुना था तो तुम्हें याद होगा, ये बातें हम वहां कर चुके हैं. ये 13 लाख करोड़ including an interest free loan for 50 years offered to the state government for 1,05,000 crore. पिछले साल भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट. पिछले साल 1 लाख करोड़ दिया था, इस साल 1,05,000 करोड़ दे रहे हैं. तो इंटरेस्ट फ्री कैपिटल लोन is what has been capital expenditure, a loan has been given to state government. Now another thing is that what is our revenue expenditure requirement? How does we do that? Now important thing here that we need to remember is that
वी हैव टू रैशनलाइज सब्सिडीज। मैं तुम्हें 2 मिनट में वहां लेके चलता हूं। पहले तुम्हें एक बात बताता हूं कि अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पे है, 9.4 ट्रिलियन रुपीज, ये इंटरेस्ट पेमेंट पे सबसे ज्यादा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे, कभी कभी ऐसे ही दे देंगे और बोलेंगे 1 2 3 4 लगाओ, किस पे ज्यादा खर्चा है किस पे कम खर्चा है। सो इंटरेस्ट पेमेंट इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर पॉइंट वेयर वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज 9.41 लाख करोड़। देन सैलरीज टेक आउट अनदर 4.1 ट्रिलियन रुपीज, सैलरीज पे ये खर्च करते हैं हम, तो इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च, सैलरीज पे खर्च। तीसरा हमारा खर्चा है जो हमें जो जिसे हम थर्ड रैंक दे सकते हैं, दैट इज ऑल द मेजर सब्सिडीज जिनके ऊपर 3.18 ट्रिलियन का खर्चा है। ऑल द मेजर सब्सिडीज वेयर वी स्पेंड 3.18 ट्रिलियन। तो ये 3 मेजर एक्सपेंडिचर सोर्सेज हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इन आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर these are the 3 major expenditure sources. On defense services there is 2.33 trillion rupees, which is the 4th largest expenditure on defense services. So these are some of the major revenue expenditures that we do. अब moral of the story क्या बना इससे, analysis क्या सीखे? The analysis that we learn here is, first of all, pay back the old high debt loans, reduce interest burden. That is first thing. Pay back the old high debt loans. जरूरत पड़े तो पुराने लोन को चुकाने की, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा आया, पुराने लोन चुकाओ ताकि खर्चे का बर्डन कम हो। इंटरेस्ट पेमेंट सबसे वाहियात एक्सपेंडिचर है सरकार के लिए अगर देखा जाए तो। और सोच के देखो, 45 लाख करोड़ का बजट बना और 9 लाख करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो 21% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज गोइंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। ये गड़बड़ है, इसको सुधारना जरूरी है। सो वी हैव टू कर्टेल आवर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक सर्वे एक सही बात कहते हैं, वो कहते हैं that interest expenditure was not that high, but during COVID pandemic we have borrowed a lot, and due to those borrowings, like the government borrowings has gone up a lot, and due to those borrowings the interest burden has increased. Okay, but now things are normalizing. Why don't we sell our public sector companies, some of them which are not giving any use to us, like Scooters India, and why don't we use that money to pay back this old loan so that the interest burden can be reduced? तो ये कुछ सजेशंस हम बोल सकते हैं। पहली बात, कंसोलिडेट द फिस्क, पे बैक द इंटरेस्ट पे लोन्स एंड रिड्यूस इंटरेस्ट बर्डन। सेकंड, rationalize subsidies. The subsidies have to be rationalized. What does rationalization of subsidy mean? Target the subsidy better, make sure that those who are deprived get the money, but also make sure that wastefulness doesn't happen. Those who are rich, those who are better off, they don't get the subsidy. बहुत बड़ा सब्सिडी बर्डन है ये जो हम लेके चलते हैं, 3 लाख करोड़ का। और ये पता है कौन सा सब्सिडी बर्डन है? मेजर सब्सिडीज। इनके अलावा छोटे छोटे सब्सिडीज हैं जिनको हम देते हैं। टोटल सब्सिडी बर्डन सरकार पे 5.5 लाख करोड़ का है। The total subsidy burden on the government is 5.5 lakh crore. These are just major subsidies. But imagine this is another burden. Again, we are paying a lot of salaries. Salaries are another burden on us. तो सैलरी बर्डन नहीं है, लेकिन अगर हम वर्कर्स को एफिशिएंट बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं, तो सैलरी बर्डन नहीं है। बट इफ द वर्कर्स टेक सैलरी नॉट वर्क, इट्स अ बर्डन। एक और बात सोचो, पेंशन के ऊपर 2.07 ट्रिलियन खर्च करते हैं हम। अब सोचो 2,07,000 करोड़ का पेंशन और जो हमारी सरकार में कुछ लोग कहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे चलते हैं फिर से। ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाना एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत खर्चा कर देंगे बिना प्रॉपर लोगों को टारगेट किए हुए। माय मैटरनल ग्रैंडफादर वाज एन IAS ऑफिसर, सर्व्ड फॉर 35 years एंड टुक पेंशन फॉर 35 years। ये गड़बड़ है। अब देश की बढ़ रही है लॉन्ज। मैं उनसे मजाक भी करता था, इज नो मोर नाउ, आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम। तो उनसे मजाक करता था कि भाई जितना दिन तुमने नौकरी की उतने दिन तुमने पेंशन भी ले लिया, अब जान छोड़ दो। और कोई जरूरत नहीं थी उनको, बड़े से घर में रहते थे, किराए से उनको पैसे आते थे, सेविंग्स के पैसे आते थे। समझाना ये चाह रहा हूं that this kind of burden we should try avoiding
it is not healthy for the nation in the longer run. So, moral of the story is, rationalize your expenditure by doing what? Pay back the old loans, control interest expenditure, rationalize and target the subsidies better, avoid wasteful subsidies, control the expenditure. Make sure salaries are paid, but salaries are paid with productivity enhancement, which will mean better output will be produced, and then we will be able to afford the expenditure. तो अगर कभी तुम्हें कोई बोले फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए क्या करना चाहिए, ये बातें आप कह सकते हो. डिसइन्वेस्ट करो, जो पैसे आए पे बैक कर दो उससे पुराने लोन्स. सो दीज थिंग्स यू कैन सजेस्ट. It's politically viable provided they do leadership rather than rulership. Politically surely viable. All right. Then if you look at it, and about old pension scheme and new pension scheme, I will be giving you a detailed talk also, but that I will be doing in a separate video, not today. Then we move further, और ये ranking याद रख लोगे. 1, interest payment, 2, major subsidies, 2 salaries, 3 major subsidies, 4 defense expenditure, 5 pensions. This ranking you should remember. Prelims में क्या करते हैं, यही question घुमा फिलाकर पूछ लेते हैं आपसे. Alright, that is the basic idea. Then if we go further on our discussion, we talk about the next aspect, which is what are the steps that the government has taken in the last few years to improve the efficiency of union budget. This is steps taken in union budget to improve steps that should be taken in union budget to improve efficiency in expenditure. एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या करें, मैंने उसके लिए आपको कुछ बातें बोल दी जो मैं बता चुका हूं तुम्हें ऑलरेडी, बट एक बार फिर से क्विकली रिकलेक्ट कर लेते हैं. पहला, रीप्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर एंड रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज will boost agricultural demand, fulfill redistributive imperatives. How do you reprioritize expenditure? Spend more targeting the poor, spend more increasing the reach out. That is reprioritizing expenditure. खर्चे वहां करो जहां गरीब तक ज्यादा पहुंच बन सके, प्रायोरिटी गरीबों को मिले, तो अपने आप लोगों के हाथ में इनकम आए तो वो बढ़ाएंगे खर्चे. अगर अमीरों को सब्सिडी मिलती रहेगी तो वो खर्चे उतना नहीं बढ़ाते हैं. तो ये है रीप्रायोरिटाइजिंग एक्सपेंडिचर, जिससे एग्रीकल्चरल डिमांड बूस्ट किया जा सके. So give money to landless agricultural labor, reach subsidy to the poorest deprived person in terms of food. That is reprioritizing expenditure. And fulfill redistributive imperatives. That is small farmer and marginal farmer, they should be helped. Workers trapped in unorganized sector, they should be helped. So fulfill redistributive subsidy. Then then that is one thing we did. The survey also said that the government had to do all this in order to improve its position. Then of course higher food and fertilizer subsidy requirement, but this was because of the war. So again control this after the war has stabilized. The higher food and fertilizer subsidy ये देना पड़ा सरकार को, लेकिन ये वॉर की वजह से देना पड़ा. स्टेबलाइज करें जैसे वॉर स्टेबलाइज कर गया है, इसीलिए इस साल के बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी और फूड सब्सिडी को कम किया गया है. There was a high food subsidy given, fertilizer subsidy given, but that was because of the war. So we can stabilize it as the war stabilizes. Again, remember that. And then interest payment as a proportion of receipts increased due to higher government borrowings. So retire old borrowings by using non-debt
capital receipts like disinvestment, recovery of loans, etc. कुछ पैसे जो एसेट मोनेटाइजेशन से आ रहे हैं, जिनकी चर्चा करूंगा मैं तुम्हारे साथ बाद में, I'll talk to you about it, but some money that we are getting from asset monetization, we can also pay that back. So that's again something used to pay the loans back. तो ये कुछ तरीके हमें निकालने पड़ेंगे कि लोन वापस करें, इंटरेस्ट का बर्डन कम करें। तुम सोच के देखो 20% अपना खर्चा अगर सिर्फ इंटरेस्ट पे हो रहा है तो ये जरूरत से ज्यादा है। If out of total expenditure 20% is on interest, then it's more than what we can afford. So that is one thing that we should try controlling. Now the next thing that we talk about, the next thing that we talk about is that when it comes to reforms that the budget has seen in the last few years, ये important है, ये तुम्हारे मेंस के लिए काफी जरूरी है। चूंकि सर्वे ने पूरा एक बॉक्स बना दिया इस पर, तो मेंस में सवाल पूछ सकते हैं, तभी मैंने तुम्हें एक डिटेल्ड सा आंसर दे दिया है यहाँ। पहला, improved fiscal transparency and realistic revenue assumption in the budget. ऐसा कैसे हो रहा है? Improved fiscal transparency and realistic revenue assumptions in the budget. समझना ये बात, improved fiscal transparency here means reducing off budget expenditure. Reducing off budget expenditure. ये एक जरूरी चीज की हमने, that we have reduced the off budget expenditure. 2019-20, the total loan outstanding of Government of India to Food Corporation of India was more than 2 lakh crore rupees. Thankfully, the Government of India accommodated that extra loan in the budget of 2021, paid it back to Food Corporation of India, settled it. Similarly, total loan outstanding of Air India was 52,000 crore rupees. Thankfully, in the budget of 21-22, entire outstanding loan settled it. ये अच्छी शुरुआत है। सरकार नहीं तो पहले क्या करती थी, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा ना दिखे इसीलिए बजट के बाहर बोरो कर लेते थे। कहां से बोरो करते थे? पब्लिक सेक्टर के थ्रू, उनके ड्यूज रहने देते थे। So now the good thing is there is no public sector due on loans. Government has paid it back all. That is one idea of improved fiscal transparency. छिप के लोन नहीं लेते हैं। Then realistic revenue assumptions in the budget. That is overestimation is not done. पहले क्या हो जाता था? ग्रोथ ओवर एस्टिमेट कर लेते थे, रेवेन्यू ओवर एस्टिमेट कर लेते थे, वो अब नहीं होता। Overestimation is not done. Now we don't overestimate our revenue expenditure, which means that we don't overestimate our deficit, underestimate our deficit. अगर आप अपने रेवेन्यू को, जो रेवेन्यू आने वाला है, पैसे आने वाले हैं, उसे ओवर एस्टिमेट कर लोगे तो जो डेफिसिट है अंडर एस्टिमेट करेंगे और साल के अंत में झटका लगेगा। Thankfully, we have learnt our lessons. We don't overestimate our revenue, which in fact last year we underestimated our revenue by almost 4 lakh crore rupees. So that extra money came, and that extra 4 lakh crore was very helpful in meeting the requirement of food subsidy that was needed extra, fertilizer subsidy that was needed extra. So that ways we have done comparatively better. And then, so this is one benefit. Then discontinuation of plan and non-plan expenditure. Discontinuation of plan and non-plan expenditure. ये 2018 के 17-18 के बजट के साथ हमने शुरू किया कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बीच में डिस्कशन खत्म करें। क्यों? प्लानिंग ही खत्म हो गई थी। 5-year plans were not there anymore. So no need to distinguish between plan and non-plan expenditure. एक thought process क्या था? Plan expenditure is important because it is for development purpose. Non-plan expenditure is not important. It is not for development purpose. तो सरकार क्या करते थे? प्लान एक्सपेंडिचर ज्यादा करते थे, नॉन प्लान कम। तो स्कूल की बिल्डिंग बन गई, स्टेशनरी का पैसा दिया ही नहीं। क्या फायदा है स्कूल की बिल्डिंग बना के? फिर ये दिक्कत थी हमारे प्लान और नॉन प्लान के डिस्टिंक्शन की।
आपने बिजली का खंबा लगा दिया और बिजली का तार के पैसे या रिपेयर के पैसे, मेंटेनेंस के पैसे देना ही भूल गए। तो प्लान और नॉन प्लान का ये परेशानी थी। सरकार ने बोला वी विल नॉट डू प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रादर वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पता रहेगा ये खर्चा है कैपिटल पे, एक प्रोडक्ट बनाने पे, और ये खर्चा है फिर उसके डे टू डे एक्सपेंडिचर्स मीट करने पे। There is one thing needed to establish a project and then more and more expenditure needed to run the project. तो capital expenditure, revenue expenditure, इसके बीच का distinction किया गया। So plan and non-plan expenditure has been replaced by capital expenditure and revenue expenditure. Plan and non-plan expenditure has been replaced by capital expenditure and revenue expenditure. And then it has, so that has helped in effective planning and better allocation. You know why better allocation? Now there is allocation for capital expenditure, बिल्डिंग बनाए स्कूल के, और वहीं पता चल गया कि अगर स्कूल की बिल्डिंग बनी है तो फिर उससे रिलेटेड सैलरी का खर्चा होगा, स्टेशनरी का खर्चा होगा, तो रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा डाल दिए। So there is allocation for capital expenditure and related revenue expenditure. So that is why effective planning and better allocation of resources, that is what that was being there. Now see, when we talk about the factors, we say that third thing that we did was merger of railway budget with union budget. Why? It gave holistic picture. Why holistic picture? Now railway and steel and coal and textile, all ministries budget could be brought together. जो रेलवे के इनपुट सप्लायर्स थे, जो रेलवे के आउटपुट यूजर्स थे, सब इकट्ठा होकर बजटिंग होती फाइनेंशियल फिस्कल मार्केट में. That was a good thing to do. So that was one thing done by merging rail budget with union budget. Then multimodal transport planning could be facilitated. Earlier rail budget used to be separate, so railway minister would come and announce their own plans for new rail routes, new rail lines. Now that has gone. Now it is railway, airway, waterway and say roadways. और ये चारों जो रास्ते हैं मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट, उनकी इंटरकनेक्टिविटी तुम सोच के देखो. जैसे हमने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया, लुधियाना to Prayagraj railways, Prayagraj to Banaras roadways, Banaras to Haldia waterways. You see that? And the entire zone connected by airways. So multiple framework बनाए जिससे coordination between different possibilities of ways मिलती हैं. So that is the idea of facilitating multimodal transport planning that has been enhanced, and efficiency of resource allocation. कैसे? Railway is not required to pay dividend to central government. पहले क्या होता था? Railway would pay dividend to central government and then railway would get budgetary support from central government. इस हाथ से देके इस हाथ से ले लो, फायदा नहीं. रेलवे सरकार की कंपनी है, लॉस में चलती है, डिविडेंड कहां से देंगे? पर डिविडेंड खींचा जाता था उनसे पहले. तो अब रेलवे का रूल क्या हुआ? दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव देम बजटरी सपोर्ट. और उससे एक और फायदा हुआ है इस एनहांस्ड एफिशिएंसी एलोकेशन में, इंक्रीज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे. मैं तुम्हें एक डेटा देता हूं. इन 2017 व्हेन रेलवे बजट वाज नॉट मर्ज्ड, the capital expenditure on railway was only 39,000 crore, and from there today the capital expenditure on railway is 2,40,000 crore. So within 5-6 years capital expenditure on railway has increased almost six and a half times. So that is a big increase that we see. And why is capital expenditure in railways important? Safety projects, technological enhancement, making sure there is electrical transportation, making sure there is electronic signaling, ये सारा capital enhancement of railways हैं. तो ये चीजें हमें मदद कर रही हैं कि रेलवे की हालत थोड़ी सुधर रही है उसके वजह से. और एक और काम सरकार ने क्या किया? They shifted the date of budget presentation.
they shifted the date of budget presentation from 1st March to 1st February. Again, a very good decision. Why a very good decision? Because 1st March used to mean that the budget will be passed by April, and then the distribution would take place by May, and then monsoon would set in, and no projects would begin before September, October, or that time. Now what is the good thing? Budget is presented on 1st February, discussed throughout February, March, passed by mid-March, distribution allocation done by 1st April, all departments have the money, they can do their expenditure thereafter. So that is again something, you know, that is again something that helps better. Alright, that is again something that helps better. So this is the basic ideal that we go by, and that is why what are the 4 advantages that comes of reframing the budget. ये जरूर अच्छे से याद कर लो, ये मेंस में या प्रीलिम्स में कहीं भी पूछा जा सकता है. इकोनॉमिक सर्वे के बॉक्सेस हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के, क्योंकि ये पॉलिसी ओरिएंटेड बॉक्सेस हैं. सो दिस यू शुड डू गुड इनफ. Now, the next thing that we see, the next thing that we see here is when we talk about, review of state finances. Review of state finances. Devil, you are asking me to please repeat data of railway. God गुस्सा हो जाएंगे devil अगर मैंने repeat कर दिया तो. पर चलो, तुम कहते हो तो आज गॉड से माफी मांग लूंगा. पहले था 39,000 करोड़ रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब 2,40,000 करोड़. ऑलराइट, दैट इज व्हाट वी आर हैविंग नाउ. ओके, लेट्स सी दिस. नाम इंटरेस्टिंग रखते हो तुम लोग अपना, मैं भी सोचूंगा कुछ ऐसा ही. लेट्स सी दिस. सो वी से ओवरव्यू ऑफ स्टेट फाइनेंसेस. अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसिप्लिन नहीं रहा तो आपके इकोनॉमी की हालत वहां से भी खराब हो सकती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलती है. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट स्टेट गवर्नमेंट्स रिमेन डिसिप्लिन्ड. इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट डिसिप्लिन्ड, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम for long-term financing. So let's analyze as to where they are. First is, states have been improving upon their finances post-pandemic. What is the improvement? In 2020-21, 5% of GSDP they borrowed. In 2022, 4%. 2023, 3.5%. This will mean reduced burden on financial markets as borrowings of state will otherwise result in reducing bond price and increasing bond yield, leading to crowding out. That is one thing, that there is reduced burden as financial markets, on financial markets. देखो, अगर स्टेट की बोरोइंग बढ़ी तो स्टेट कैसे बोरो करेंगे? बॉन्ड इशू करेंगे. अब स्टेट ने बॉन्ड इशू किया, सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी, और बॉन्ड का प्राइस कम हुआ मतलब बॉन्ड के यील्ड बढ़े, और मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा. तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट होता प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे. सो थैंकफुली स्टेट्स हैव बीन डिसिप्लिन्ड. They have been reducing their borrowings consistently, and as they reduce their borrowings, it will mean bond yield will not rise as much, because already due to inflation, RBI is tightening the money supply. With RBI tightening money supply, already people are running short on liquidity and bond yields are high. If state further borrowed more, it would have been more trouble. So it's a good idea that states are trying to control their net borrowings. What will be the, what will be the whole idea, what will be the whole idea of then enhancing this? Let us see this. पहली बात जो अच्छी बात है, this is advantage. Capital expenditure for states grew by
32% in the fiscal year 23 compared to last year. ये PA का मतलब हुआ compared to last year. तो ये क्यों हुआ ऐसा? It was due to strong revenue buoyancy. The state share in GDP kept rising. So strong revenue buoyancy, support provided by the center. The payments have been released to the states comparatively better, and total transfer to states have continuously risen. In fact, the economic survey says that the total grants to state have gone up from approximately 3 lakh crore as on centrally sponsored scheme to 4.4 lakh crore. This is other than devolution to states. जो टैक्स का डिवोल्यूशन है वो तो अलग से है, उसके अलावा जो पैसे स्टेट के पास जा रहे हैं, 3 लाख करोड़ रुपए जाते थे 2019 में, अब जाते हैं 4,40,000 करोड़। ऐसे ही फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स जो जाते थे 90,000 करोड़ जाते थे 2019 में, अब 1,90,000 करोड़ जाते हैं। और जो अदर ग्रांट्स और लोन ट्रांसफर्स थे 90,000 करोड़ जाते थे 2019 में, अब 3 लाख करोड़ जाते हैं। Just to give you an idea, it means that today the states are receiving 9.3 lakh crore rupees from central government apart from the devolution of tax, while just 4 years back they used to get 4.8 lakh crore from central government. So when we say support provided by center, 2019 4.8 trillion rupees is what state governments would get from the central government beyond given by the finance commission tax devolution. ये tax devolution के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। तो tax devolution के ऊपर ये पैसा मिलता था state government को। 2023 the state governments are getting 9.3 trillion rupees from the central government. I'm sure all of us understand that inflation has not increased as much, which means there has been some buoyancy for the state government, which allows them to spend more on capital expenditure, allows them to spend more on capital expenditure. And then of course, GST compensation payments have been given to states. This compensation payment, 2.69 trillion rupees was given to the states, where the money was borrowed by central government to pay the compensation to state government in the year 2020-21. And the burden of this loan will not be on the state government, because this loan will be paid back from the GST compensation cess money which is received. तो सरकार ने 2020-21 में चूंकि बहुत कम पैसे आए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खुद भी पैसे नहीं थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी कंपनसेशन का सेस देना था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 2.69 ट्रिलियन रुपीस बोरो किया, 2.69 ट्रिलियन रुपीस बोरो किया, और अब इस बोरोइंग को चुकाया जाएगा जो पैसे जीएसटी कंपनसेशन से आएंगे. The central government borrowed 2.69 trillion rupees, gave it as compensation to the state government for the shortfall in revenue for GST, and the state government won't have to take any burden of this. The money for this will be paid back from GST compensation cess. But all this meant, and then the interest-free loans that I have already told you, 1 trillion rupees loan offered in 2022-23, and this is interest-free loan for 50 years, and another 1.05 trillion is 1.15 trillion is offered in 1.15 trillion is offered in 2023-24. So this is what the state governments have seen. If you see, this is what the state governments have seen as revenue enhancement. तो ये पैसे आ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, इसीलिए जब स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो कोरी गप है. ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि खर्चे बढ़ा लिए गए हैं. अब सोचो मेरी आमदनी हो 98 और खर्चा हो रुपया, तो हमेशा रोऊंगा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती. ये थोड़ी कहूंगा मैं खर्चे ज्यादा कर रहा हूं और मेरी औकात नहीं है ये खर्च करने की. तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अभी इस हरकत पे लगे हुए हैं. एक्चुअली दे डोंट हैव द मनी बिकॉज दे हैव ड्रिवन फास्ट.
they are giving welfare schemes, they are giving insurance schemes, they are giving free money schemes. How will you finance it unless you are not productive? So the focus of the state government should be on productivity and not on financing the other factors there. So keep it in mind. In fact, अगर तुम सोच के देखो, जो स्टेट टैक्सेस सब्स्यूम हुए थे जीएसटी में, मैं पिछली क्लास में भी तुम्हें बता रहा था, वो 4,40,000 करोड़ के थे, और जो जीएसटी का कंपनसेशन उनको मिल रहा है, जीएसटी में जो पैसे उनको मिल रहे हैं, वो 5,73,000 करोड़ रुपए हैं. GST is giving them 5,73,000 crore, while the state taxes subsumed in GST was 4.4 lakh crore. So it's 1,30,000 crore extra that the states are getting today when it comes to GST money that they are getting. But again, as I said, if the expenditure has been increased a lot, it creates problem for the people. So we have to be careful about that. Now see, so remember, the center borrowed funds passed on to the states. Keep that in mind. Survey has highlighted it at 2 different points per se. Then the other thing that the central government has done is they tried improving upon state finances. उन्होंने कहा कि transfer from center to states will happen through share of states in union tax, finance commission grant, centrally sponsored scheme and other transfers. इन 4 चीजों से स्टेट को ये पैसे मिलते हैं, और यही मैं तुम्हें अभी बता रहा था कि share of states in union tax approximately 11 lakh crore and then 9 lakh crore this. So 20 lakh crore rupees is what states are getting from the central government. That is what we observe in this whole discussion. I love you too, Harshvardhan. Thanks a lot. Now see, there are few things that I needed you to understand here, and I see you doing some wonderful debates across in the discussion. So good enough, and as all of you are helping each other, that makes me feel even better that you know you guys are on track and you are doing a great job. So perfect, keep it up, do well. Just make sure that you don't lose track of the discussion, because if you lose track of the discussion, then we will be in trouble. But great work. You are doing well. Perfect. You go ahead. Let's see this then. When we talk about transfers from center to state, one is share of state in union tax, finance commission, CSS, and other transfers. So that is what total transfers have been increased tremendously in the last 4 years. There is something more that I actually wanted you to see that would help you. That is, when we talk about how central government has borrowed money, passed it on. Also, the central government did cess payment and tax devolution to give them early access to fund and enhanced borrowing. ये तुम्हारा जानना जरूरी है. In 2020-21, states were allowed to borrow their regular limit. स्टेट को वैसे अलाउड है कि वो 3% ऑफ स्टेट जीडीपी बोरो कर सकते हैं. स्टेट को वैसे अलाउड है दैट स्टेट्स कैन, ये नियम कब बना? 2004-05 में. दिस रूल वाज मेड इन 2004-05 दैट स्टेट्स कैन बोरो. इसको कहते थे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन. दिस वाज कॉल्ड fiscal responsibility legislation, that states can borrow up to 3% of their state GDP. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब कोविड पैंडेमिक आया तो स्टेट्स को बताया कि 3% plus 2% of state GDP is what they will be putting forth. 3% plus 2% of state GDP is what they will be allowed to borrow. लेकिन अपने आप borrow नहीं allowed होगा. कैसे allowed होगा? Those states which follow one nation, one ration card will be allowed to borrow an extra 0.5% of state GDP. Those states which will do ease of doing business reforms will be allowed to borrow another 0.5% of GDP. Apart from that, those states which will do electricity sector reforms, power sector reforms will be allowed to borrow another 0.5% of GDP.
एक और 0.5% उस वक्त आया था कि जो स्टेट खुद लोन लेंगे और अपना जीएसटी का कंपनसेशन पूरा करेंगे उन्हें दिया जाएगा, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन ले लिया तो वो 0.5% का लोन सभी स्टेट्स को अलाउ कर दिया गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, आई एम जस्ट रिपीटिंग इन इंग्लिश दैट in 2000 and 2021 central government had initially asked the state governments to do the borrowing when it came to state GDP to pay for the compensation of GST. Of course, there ensued a controversy. State government said, why should we borrow? And correctly so, why should state government borrow when it was the commitment of the center to pay that money? So then central government said, okay, hang on, you don't borrow. But initially, to incentivize the states to borrow, the central government had said that those states which will borrow will get another 0.5% of state GDP allowed to be borrowed from the market. But then when the central government borrowed and gave the money to the state government, then there was no need to borrow by the state government. So that extra 0.5% was made available to all the state government. So that is where we have been, that we say that one nation, one ration card, 0.5%, ease of doing business, 0.5%, electricity reforms, 0.5%, plus all states 0.5%. Initially it was for those states which would borrow to pay for GST compensation. So this was 5% of state GDP which the central government allowed them to borrow. अब ये बातें क्या हैं? कभी कोई आंसर लिख रहे हो फिस्कल फेडरलिज्म पे, कभी कोई आंसर लिख रहे हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, ये बातें यूज करो, इनसे तुम्हें नंबर मिलेंगे, क्योंकि तब तुम फैक्चुअल से अपने एग्जामिनर को कन्विंस करोगे दैट व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट fiscal federalism, what are the steps taken by central government to promote cooperative federalism. You know, that is the way you should go for it. Then if you see, or if we take the story further, another thing is, what is the debt profile of our central government? हमारे central government का debt profile क्या है? The power sector reforms, Ayush, I am answering your question. The power sector reforms that we expect the state to do is making sure that discoms are made more reliable, they collect the money better, also to make sure that electronic metering is done, to make sure that proper targeting of consumers and identification of consumer is done, theft of electricity is stopped. That is the power sector reform that the central government expects the state government to do. Then see, we take the story there. First of all, the debt profile of the government increased drastically. That is due to pandemic leading to this change. The central government debt was around 73-74%. A total central plus state government debt was 73-74% of GDP in 2019-20, but due to the pandemic, it increased and went above 90% of GDP. Due to the pandemic, it went above 90% of GDP. But let's do it one by one first. So first of all, IMF predicts global debt will be much higher, 91% of GDP. In fact, countries like China, countries like Japan, countries like USA, their debt has increased to above 100%. In fact, in case of China, it is above 200%, 100%, and 250% of GDP. हाँ, इन कंट्रीज को एक एडवांटेज ये है कि ये रिलेटिवली बिगर कंट्रीज हैं और कंपैरेटिवली इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड हैं और इनके ज़्यादा लोन्स अपने ही करेंसी में हैं, जो कि इंडिया के साथ भी ट्रू है. तो ये जो लोन अपनी ही करेंसी में होते हैं उन्हें कम खतरा माना जाता है. If the loan is in my own currency terms, it's taken as less dangerous for a very simple reason. In the worst situation, I can print and pay it back. ज़्यादा खतरा तब है अगर आपके लोन फॉरेन करेंसी में ज़्यादा हो. So that is one thing to keep in mind. Coming back to the thing, so debt sustainability is a concern. अब देखो, फाइनेंस कमीशन ने recommend किया है, 15th Finance Commission has recommended that India's debt to GDP ratio should be 60%. This should be India's debt to GDP ratio. इसमें 40% होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट और 20% होना चाहिए
स्टेट गवर्नमेंट का डेट. You know, India's debt to GDP ratio should be around 60%, 40% should be central government debt and 20% should be state government debt as a percentage of GDP. But अभी हम थोड़े चिंताजनक विषय हालत में हैं, क्योंकि IMF ये कहती है, पहली बात टाइटेंड बजट कंस्ट्रेंट. ऑलरेडी कोविड पैंडेमिक में सारे कंट्रीज बहुत खर्चा कर चुके हैं, बहुत लोन ले चुके हैं. सो हायर डेट टू जीडीपी रेशियो मीन्स वी कैन नॉट विथस्टैंड फर्दर शॉक्स बिकॉज already the government are overburdened with debt. So tightened budget constraint, challenging global financial conditions, the interest rate is being increased all over, the financial markets are not doing well, most of the financial markets have gone down by 10 to 12% in the last 6 months. Indian stock market has still held well, mainly because of domestic demand for stocks rising. But foreign investors have been going out in droves all over. So financial markets are not doing well. Interest rate is continuously rising because central banks all over the world are raising them to control inflation, which will mean any further loan will put more interest burden, more expenditure burden on the government, not healthy. So that, and then slower growth. जो GDP growth IMF कह रहे हैं कि globe will go at 2.7%, implying that slower growth will mean debt to GDP में अगर ये slow grow किया और ये high तो debt to GDP ratio और बढ़ जाएगा. तो इसीलिए IMF कहते हैं that we should be careful that we don't let the debt to GDP ratio high remain increase a lot. All right, that is the idea of IMF saying this. So, in that global backdrop, total liabilities of Union Government of India was relatively stable pre-pandemic, witnessed a spike. As I told you, the debt to GDP ratio of the government was 73% in 2019-20. That debt to GDP ratio has come up or went up to 91% in 2020-21. And why did this happen? Because GDP गिर गया, क्योंकि पैंडेमिक आ रखा था. शार्प कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी. 2019-20 में हमारा नॉमिनल जीडीपी था 220 ट्रिलियन रुपीस और 2020-21 में हमारा नॉमिनल जीडीपी घट के हो गया अराउंड 205 ट्रिलियन रुपीस. तो ये हमारे लिए झटका था. दैट दिस वाज अ बिग फॉल फॉर अस. साथ में फिस्कल डेफिसिट एडिशन टू बोरोइंग्स 2019-20 में थे 3.8% ऑफ जीडीपी इन 2019-20 और ये फिस्कल डेफिसिट बढ़कर हो गया 9% ऑफ जीडीपी, 9% ऑफ जीडीपी बाय 2020-21. तो सोचो, लोन बढ़ गए और इनकम घट गई, डेट जीडीपी राइज कर गया बहुत ज्यादा. अब इसको हमने थोड़ा कंट्रोल किया है. In 2023-24, it is expected that our debt to GDP ratio will come to around 83%. ठीक है, अच्छी बात लेकिन इसमें यह है कि हमारा जो लोन बढ़ने का रेट है वो हमारे नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने के रेट से स्लो है. The interest rate that we have to pay on our loan is at a lesser value than the GDP growth rate. Our fiscal deficit of center and state is expected to rise by around 9% this year, while the nominal GDP is expected to grow 11%, 10.5%. So that will bring debt to GDP ratio by another 1.5%. So these are some welcome changes that we are going here or getting across here. Perfect, thank you साहिल. Let's see this. तो ये एक अच्छी बात लग रही है कि चलो डेट टू जीडीपी रेशियो थोड़ा कम के तरफ शायद दिख जाए. और क्यों बढ़ा ये डेट टू जीडीपी रेशियो? हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो मैं आपको बता चुका हूं एंड अनकंस्ट्रेन्ड रेवेन्यूज. रेवेन्यू कहां से बढ़ेंगे? जीडीपी बढ़ ही नहीं रही थी, टैक्स बढ़ ही नहीं रहा था, तो इसकी वजह से हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ गया है देश में. नाउ इंडियाज पब्लिक डेट इज रिलेटिवली स्टेबल. क्यों रिलेटिवली स्टेबल है? क्योंकि अभी भी इंडिया का इंटरेस्ट रेट रिलेटिवली लेस है और डोमेस्टिक बोरोइंग्स ज्यादा है. 95% ऑफ गवर्नमेंट्स टोटल नेट लायबिलिटीज वर डोमेस्टिक करेंसी. अभी मैं तुम्हें बता रहा था, अगर डोमेस्टिक करेंसी में लोन है तो फिर भी ठीक है, पैसा छाप के दे दोगे वापस. अगर फॉरेन करेंसी में लोन है
तो पंगा आता है। तो अभी थोड़ा हम बच गए उस मामले में। Oh, the creditors are mainly the institutions, Upendra. It's not a petty question. It's actually a very important question. उपेंद्र, जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि जब सब लोग डेटर हैं तो क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर है चाइना, क्रेडिटर है इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, ये लोग हैं क्रेडिटर, और हम लोग सब हैं बोरोअर। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्रेडिटर है फाइनली पावर वही वील्ड करेंगे। अमेरिकन इसीलिए क्या करते हैं, सारे लोन डॉलर में दिलवाते हैं कि उनको पता है पैसा छाप के दे देंगे वापस। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू आस्क इफ यू आस्क मी, उपेंद्र। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, सो 95% ऑफ लायबिलिटीज इन डोमेस्टिक करेंसी, और जो सोवरेन एक्सटर्नल डेट का मतलब होता है लोन टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम फॉरेन मार्केट, ये है सोवरेन एक्सटर्नल डेट। सरकार ने जो लोन लिया फॉरेन मार्केट से वो सिर्फ 4.9% का है। मतलब अगर करेंसी फ्लक्चुएट करती भी है, अगर थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते भी हैं, इट शुड नॉट बी अ वरीइंग फैक्टर, बिकॉज इवन इफ करेंसी फ्लक्चुएट्स, इवन इफ देयर इज अ स्लाइट अप एंड डाउन, वी विल बी एबल टू पे बैक द मनी, foreign money, because it's very less as a percentage of total loan. Another thing is that it is entirely from official sources, that is from other central bank or other governments. So what will that do? That will mean market fluctuation will not affect it. That is why insulated from volatility. Since it is from entirely official sources, पूरे के पूरे ऑफिशियल सोर्स से हैं, तो अगर मार्केट फ्लक्चुएट करता भी है इस पर असर नहीं पड़ेगा। ये भी एक अच्छी बात है। देन रिमेंबर द अदर थिंग इज दैट व्हाट टू डू नाउ फर्दर। इसमें एक बात और समझना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने ट्रेंड्स को हमें कंसोलिडेट करना पड़ेगा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ट्रेंड्स कंसोलिडेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कंसोलिडेट करेंगे? इफ यू सी दिस, consolidating central government finances, that is trends and finances visible from government's fiscal path. सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है that by 2025-26 fiscal deficit central government will be brought down to 4.5% and fiscal deficit for state government will be kept at 3%. That's happy news. Imagine if our nominal GDP grows at 11% and fiscal deficit grows at 7.5%, मतलब हम लोन बढ़ाएंगे 7.5% के रेट पे, पर हमारी इनकम बढ़ेगी 11% के रेट पे, तो हर साल डेट टू जीडीपी 3.5% से थोड़ा कम होने लग जाएगा। हमारे डेट टू जीडीपी का एक और बेनिफिट है जो हमें मिल रहा है, वो ये है कि हमारी सरकार ने अपने लोन को जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ाया है। अभी भी वो 100% के नीचे है, जीडीपी के अंदर है, और हमारे बर्डन उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं। देन इफ यू गो फर्दर, दिस इज व्हाट इज कीपिंग द डेट सस्टेनेबल। ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कीप्स द गवर्नमेंट डेट सस्टेनेबल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारा ग्रोथ रेट हमारे इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन से फास्टर है तो हमारा डेट सस्टेनेबल होगा, क्योंकि लोन का पैसा देने के बाद भी जीडीपी फास्टर रेट पे बढ़ेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना, इफ ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, देन डेट इज सस्टेनेबल। इसे ही पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे IGRD बोल रहा था, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। इसे उल्टा कर दिया, ग्रोथ रेट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, बात बराबर है। बट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इफ द ग्रोथ रेट इज लार्जर देन इंटरेस्ट रेट, देन दैट इज फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू अ सक्सेस। ऑल्सो सी, देन द नेक्स्ट थिंग इज द recent economic growth for past 15 years led to this positive differential which has resulted in keeping sustainability going. अब यही हमें उम्मीद करनी है आगे के लिए। अगर आगे भी ऐसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहा तो सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहेगी। दैट इज व्हाई द की इज व्हाट? थिंक नाउ। द की इज इंक्रीजिंग नॉमिनल जीडीपी। एंड हाउ डू यू इंक्रीज नॉमिनल जीडीपी? नॉट बाय इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग रियल जीडीपी। अपने अगर हम ग्रोथ को बढ़ाएं
तो हमारा इन्फ्लेशन मान लो 4-5% रहा और जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी 8% हो गया, देन 12-13% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, दैट्स व्हाट इंडिया शुड बी एमिंग फॉर. एंड फ्यूचर चैप्टर्स जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वहां इसकी बात भी करूंगा दैट हाउ दिस कैन बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड. कैसे करें ये क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलना. और सर्वे ने बोला कि गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला. ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन जीएसटी एनहांसमेंट, giving loans to MSME to encourage them to formalize, putting digitalization of corporate records ऑन प्रीमियम. इन सबसे फॉर्मलाइजेशन बढ़ाने की कोशिश की गई. इनहैंस्ड कंप्लायंसेस की बात आपसे कर चुका हूं. बजट में भी 3900 कंप्लायंसेस हैव बीन रिमूव्ड. कंपनी लॉ हैज बीन सिंप्लीफाइड, सो दैट हैज बीन टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी. बेटर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम again by using GST, formalization of the economy, increasing corporate tax and income tax, simplifying the tax rates, then improved government's credibility and commitment for fiscal consolidation, जिसकी बात आज कर रहे थे. Government going for asset monetization, government going for removing off budget expenditure, government making sure that budget is now presented on 1st February, government making sure that the budget is presented with all रियलिस्टिक जीडीपी एंड रेवेन्यू एस्टिमेट्स. तो ये इनसे फिस्कल कंसोलिडेशन और साथ में गवर्नमेंट की कमिटमेंट दिखाई गई कि हम बजट को प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे. तो ये फाइंड किया गया अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस. अब जो स्पाइक्स हमें देखने को मिला वो इसलिए मिले बिकॉज हायर स्पेंडिंग वाज नेसेसिटेटेड ड्यू टू लार्ज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दिस वाज ड्यू टू पैंडेमिक एंड लॉकडाउन, सप्लाई चेन डिसरप्शन. और दूसरा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और स्लो ग्रोथ इन इकोनॉमी, सो लोअर डिनोमिनेटर जीडीपी बिकेम लेसर. इसीलिए डेट टू जीडीपी रेशियो थोड़ा हाई हो गया. दिस लोन इन इंडियन करेंसी इज नॉट ओनली फ्रॉम स्मॉल सेविंग, इट इज ऑल्सो बाय इशूइंग बॉन्ड्स. दिस लोन इज ऑल्सो बाय टेकिंग थ्रू ट्रेजरी बिल्स. तो सरकार के अलग अलग तरह के लोन होते हैं वरुण, एंड फ्रॉम देयर द मनी इज कमिंग अक्रॉस. ऑलराइट, China is giving loans via institutions. What else is Asia Infrastructure Investment Bank? What else is New Development Bank? Think all these are Chinese backed institutions giving those loans. Their debt to GDP ratio is high because their internal expenditure is very high. That is why इनमें कोई contradiction नहीं है. आप लोन देते हैं जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा होता है, और आप लोन लेते हैं अपने देश में क्योंकि आपके अपने देश के खर्चे ज्यादा हैं. सो चाइनीज आर टेकिंग मोर लोन to spend in their own country, and they are giving more loan because they have a lot of foreign exchange reserves with themselves. All right, so there is no contradiction at all. All right, so this is basically the idea that I wanted you to have to begin with. Now, what is the fiscal glide path that we should go for? We should go for making sure that we should try a fiscal glide path that is gradual reduction in fiscal deficit. और यही सरकार प्लान भी कर रही है. इससे फायदा क्या होगा? ये जो मैंने लिखा, लो रिस्क प्रीमियम होंगे. रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या होता है? आपके इकोनॉमी में खर्चा करने से जो लोग डरते हैं, उनको लगता है रिस्की खर्चा हो जाएगा, तो लो रिस्क प्रीमियम होगा. बाहर के लोग आपको लोन देने को तैयार होंगे एट अ लेसर इंटरेस्ट रेट. There will be low risk premium as outsiders will be willing to give you loans at a lesser interest rate. Also, that will lower the cost of capital, which will incentivize investment. If the cost of capital is reduced, that incentivizes investment. Also, center should incentivize states for reforms
and higher capital spending. Center कर रहे हैं ये. इस साल भी states को कहा गया है you can borrow 3% of your state GDP plus you will be allowed another 0.5% provided you do electricity sector reforms. साथ में state को loan दिए जा रहे हैं interest free. साथ में centrally sponsored schemes की जा रही हैं so that states can be incentivized to do capital spending. And then of course capex-led growth is what will make sustainable development, because that will create the resource with which we can pay back in future at a faster rate. So thank you all. I finished chapter 3 with this. I will meet you on Saturday now. We will do chapter 4. Saturday evening I will see you and we will do chapter 4 on Saturday evening. I'll see you then. Thank you. Bye-bye. Have a great night. Bye-bye.